हेलो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। आज हमारे पास आया हुआ है आईटेल A48 जिसका चार्जिंग पिन खराब है। इसका चार्जिंग पिन चेंज करेंगे हम। देखिए, ये फर्स्ट कर लिया हमने, हीटिंग गन ऑन, सोल्डरिंग आयरन ऑन। ये रहा मॉडल। इसका बैक ढक्कन ओपन कर लेते हैं फर्स्ट। ये निकल रहे हैं बैक ढक्कन। ये निकल दिया बैटरी। अब इसका स्क्रू खोलेंगे। फिर आईटेल का सीसी ट्रे। अब इसमें रिंगर का रिमूव करेंगे बेल्ट। ये रिंगर का बेल्ट सोल्डरिंग किया हुआ आता है ये मॉडल में। तो निकलते हैं फर्स्ट। ये सीसी ट्रे हमने निकल लिया फ्रेम से बाहर। अब इसमें चार्जिंग पिन चेंज करेंगे। इसमें पुराना वाला चार्जिंग पिन निकल रहे हैं जो खराब है पूरा। हीटिंग गन से ये पुराना चार्जिंग पिन कर रहे हैं रिमूव। ये निकल दिया पुराना चार्जिंग सॉकेट। इसमें पेस्ट लगा के डिसोल्डर वायर से हम पोर्ट क्लीनिंग कर लेंगे। नया पिन जहाँ पे हमको लगाना है वो सभी पोर्ट करते हैं क्लीन। देखिए, पूरा ट्रैक जो है वो सभी क्लीन कर रहे हैं हम। करेंगे नया चार्जिंग सॉकेट फिटिंग। फर्स्ट लगा रहे हैं इसमें हम पेस्ट लगा के करते हैं सोल्डर। नया चार्जिंग सॉकेट, इसमें करेंगे हम सोल्डरिंग।
ये हो गया नया चार्जिंग सॉकेट सोल्डरिंग। अब इसको कर देते हैं हम क्लीन। क्लीन करने के बाद हम करेंगे फोन में चेक। इसमें फ्रेम में लगा के करेंगे हम चेक। रिंगर का बेल्ट हमने जो रिमूव किया था, रिंगर का बेल्ट से करते हैं रीसोल्डर। ये कर रहे हैं रीसोल्डरिंग। ये बेल्ट नहीं लगाएंगे तो रिंगर नहीं बजेगा। ये लगा दिया बेल्ट। बैटरी लगा के करते हैं चेक और आपको दिखाते हैं। देखिए ये आईटेल A48 हो गया चार्जिंग होना स्टार्ट। जो स्क्रू खोला था हमने वो करते हैं फिर से फिटिंग। ये हो रहा है स्क्रू फिटिंग। देखिए ये हो गया चार्जिंग होना स्टार्ट कंप्लीट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।